So we are going to start today about properties of these operators. हाँ कम. So अब ये है कि so we are going to have, if you see chapter 4, we will just have the principles of wave mechanics. So principles in the sense that हम ये इसमें the thing which we are going to, before we are going to see कि how the state of the wave function है ना, we have seen time dependent and time independent Schrodinger equation कैसे evolve करती है. ठीक है, अब ये है कि we have to see what are the principles, can we formalize them in some principles or postulates. Before we are going to do that, we are going to have a sort of इसको क्या कहते हैं, brief recourse, or will take some detour into some properties of Hermitian operators. ठीक है, because we have seen जो quantum mechanics में हम जो variables है ना, momentum, position है ना, energy, time, these are different variables. They are variables in classical mechanics also. But once we went into quantum mechanics, we say that these operators, अगर operator language में, they may not always commute. They may not always commute. This means xp minus px is not, when we have a simultaneous measurement of these things, it's not necessarily zero. So this differentiates it from how we study variables or measurements in the classical mechanics. ठीक है, so इसमें how we can what I should say formalize the observables in quantum mechanics. So there are some properties of matrices. For example, you should, before going to this study this, आप थोड़ा सा इसको adjoint operator, Hermitian operator, skew Hermitian है ना, you just have a थोड़ा इसका आप revision करो आप. Then we come how we can formalize operators or variables of quantum mechanics in these if I use the word, in these Hermitian operators. Operators here are operators of quantum mechanics. Got my point? The way we have an operation, it's different from operators. You operate on a given function, it will give something else. So here things you operate, operator की क्या different properties, position operator क्या है, momentum operator क्या है, quantum mechanics, that's seen in the, if you go to the book, आप table देखना आप table 3.1. तो if I say for example position है हमारे पास, position operator in coordinate representation, और ये है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में ऑपरेटर ऐसे. इसी तरह अगर मोमेंटम है ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन में, इट्स लाइक दिस, इट्स डेल, इट्स ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन. Momentum like this. In the same we have angular momentum, kinetic energy, potential energy and total energy, so on and so forth. अब ये है कि before dealing with these operators, we are going to have some amount of, so how we have Hermitian operators, their eigenfunctions and आइगन वैल्यूज है ना. जब आप मैट्रिसेस में या कोई भी आइगन वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ स्टेट साई इट्स गोइंग टू ऑपरेट अपॉन, हमने कहा ए साई इज इक्वल टू ए साई प्राइम. सो आइगन स्टेट विल गिव अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू. जिस तरह आपके पास है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे a1x प्लस a2x ऐसे, इस तरह a3x है ना लीनियर इक्वेशन, तो उसमें आइगन वैल्यूज
for a particular linear equation variable it will satisfy a particular value only, है ना? अब ये linearly independent है कि linearly dependent है, that depends how we construct that augmented matrix एक साइड से and right how we do it in that sense. So in the same way जो state है ना, state का हम we are operating upon state, है ना, and that will give a particular eigenvalue, that will give a particular, and that is subject to how we have some properties of Hermitian operators come into existence. जो हमारे पास operators है, whether it's position operator, moment, quantum mechanical property, उन operators की particular properties होती है. For example, जो normal operators हैं उसमें for example xp minus px classical it will come out to be 0. So we have seen an example in which these operators xpx minus px is not equivalent to 0. So these are certain special operators which are helpful in quantum mechanics. You got my point? So अब हमारे पास जो ये है, so we are going to, for example, so in quantum mechanics, what we are interested in expectation values. Expectation values किसको कहते हैं? Average values कैसे निकालेंगे? क्योंकि state psi, जो evolution of state psi है, it's superposition of many different these waves, है ना? And कौन सा value इसका will take exact value depends upon कि जहाँ probability maximum हो, जहाँ superposition maximum हो, वहाँ हम कहते हैं. So it may not be one value, it may be ensemble of values. So our measurement will choose our वो कौन सा value आएगा हमारे पास, ठीक है? It will not be a particular value. So that's why we are interested in the average values, और उसी को हम quantum mechanics की language में expectation value कहते हैं. अब expectation value को कैसे calculate करते हैं? I have said it previously also. जैसे कोई भी quantity है f, we are going to sandwich that variable psi star and psi. We are going to sandwich it between psi star and psi. So if it's in position space, it is like this, and if it's in momentum space, so we will have from psi to phi. And there's always a way we can go from position space to momentum space and momentum space to position space via this thing. You know, that's why we have defined. So you can have this operator, you can go from this to this, this to this. But the variables will change from psi to psi star, phi to psi to phi. Sorry, it's phi. It's phi. ये phi है, ये psi है. ये position space है, ये momentum space है. तो ये expectation value हम निकालते हैं ऐसे. That's it. So if f is an expectation or average value of a linear operator. So previously also, maybe some of you might not have come. So we have defined operators. एक property होती है linearity property. The other is the anti-linear property. Linearity property में क्या है? A of यहाँ पर जैसे कोई भी operator है, f1 जैसे हमारे पास mu f lambda plus mu f rho, for example f2. So अगर हम linearity property में है इसका conjugate करेंगे, the conjugate will come outside. Like if you see, if I had so if linearity property is like this, f of lambda psi 1 plus mu times psi 2. So the scalars will come outside. F lambda psi 1 plus mu lambda mu f psi 2. तो linearity property में क्या है? That जो scalar है यहाँ पर है ना, they will come outside. So if operator is going to operate on this wave function psi 1, psi 2, so it will not have anything scalar के साथ ये कुछ नहीं करेगा. Scalar outside आएगा prefix में. It will not change scalars once the operator is operating on them. ठीक है? So this is known as linearity property. Anti-linearity property में है कि if you conjugate them, the conjugates will come outside. ठीक है?
But in quantum mechanics, where if you have linear operators की एक particular property है हमारे पास, तो linear operator representing a physical quantity whose measured values are real. Measured values are so f must be real. So it means that even though psi and psi हमने कहा था in terms of ये complex value है ना, but psi conjugate हमारे पास आता है real, ठीक है. So even though we have if we invoke Hermitian operators here, ठीक है, तो we should at the end their measurement or their expectation values at the end should come out to be real, should come out to be real, that should be contained as a property. अब उसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, we can demand f of psi star psi so you can demand this property. For example, here this is operating on psi conjugate, psi, फिर ये, so it will not, it should be the same. If we flip this to this to this, the property should be same. अब ये है कि there, if you go to the book, there is a exercise, for example, which you can do at your place, or you can some of them you can do here. For example, ये कह रहा है कि if f is an Hermitian operator, if f is an तो Hermitian operator, if you remember, it's A is going to A conjugate, है ना, transpose of that complex matrices, उसका transport, that's equivalent to Hermitian matrix, है ना. A is equivalent to A dagger, ऐसे ही करते हैं ना. उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है A is equivalent to A dagger, है ना. A dagger, इसको अगर और करेंगे dagger, it will come back, है ना. इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिकोटेड मैट्रिक्स की, है ना, इसका. सो इन द सेम वे if we represent these operators in terms of Hermitian operators, and we have their eigenfunctions and eigenvalues, है ना. eigenfunction and eigenvalues क्यों, जो ये स्टेट psi है ना, psi, इसका हम निकालते हैं, इसका एक वैल्यू नहीं है ना. That's why we are talking about expectation values. It's ensemble of values. क्योंकि जो wave function जो classical mechanics में हमारे पास एक ही वैल्यू होता है, particle went from one point to, है ना, अगर सीधे आ रहा है ऐसे. मगर हमको पता नहीं है state psi ये superposition of many waves. So it has potentialities of taking any many values for a given eigenstate, है ना. So for a given eigenstate कौन सा ऑपरेटर आएगा, कौन सा आइगन वैल्यू लेगा, ठीक है. So that's why we are taking this expectation value, ठीक है. So we have to just हमको थोड़ा सा लेना है कि if we represent these things in terms of Hermitian properties, Hermitian operators को हम use करेंगे in quantum mechanical variables, ठीक है. They are operating upon some state psi, and what sort of values they are going to take or give for a particular eigenstate, कोई particular eigen value देगा, ठीक है. So this is it. तो उसमें हम we are going to use those properties of Hermitian operators की properties क्या है, and we demand that if for this this property should also hold. And further, if f is an Hermitian operator, if f is an Hermitian operator, we can also generalize this f of psi star 1 psi 2 d3r is equivalent to Simon star f psi 2. So we have, इसमें हमने इसको थोड़ा सा we flipped psi को यहाँ से लाया, बाहर लाया ऐसे, ठीक है. इसको यहाँ लाया. So it should hold. If we flip this thing here and this thing here, we are seeing for any possible values, for any possible states psi 1 and psi 2. तो अगर हमारे पास कोई भी स्टेट psi 1 and psi 2 है,
we should be able to flip ये f operator है from psi to psi1, it should hold. This is the one thing which we are going to see, and which are represented by h by iota. So if I just for your, because some of you had not come, so which I'll show you how, for example, फर्क कैसे पड़ता है. For example, you just see it here. So commutator है, जैसे हमारे पास x px minus pxx है ना, x है पोजिशन, ये मोमेंटम है. So normal classical mechanics में it will come out to be 0. But in quantum mechanics, if we represent these position and momentum operators here like this, तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे? x और है पोजिशन, तो मोमेंटम के बदले क्या लिखोगे? h by iota this. h by iota ये del है, since it's only in one variable, it's d by dx minus अगेन. अब पहले यहां दूसरी मोमेंट यहां पर है, इट विल बी so it's operating on this function बाहर इस पर है ना, this position momentum operator, and this it's going to act on this d by dx of xf. तो देखो आप यहाँ पर आप ये पहला आएगा ऐसे, it will come out to be minus. so इसमें ये है ना, ये d by dx of xf, इसमें दो आएंगे टर्म्स, d by df of x एक कैंसिल हो आएगा, तो ये f आएगा, दूसरा वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी. जस्ट सी इट यूवी फॉर्म में, ये x d by dx ये आएगा ना, d by dx of x of f, एक आएगा d by dy of x so only f रहेगा, दूसरे में this term will cancel with this, or if I this so it will be iota hf. So it will not, one of it will cancel with this, the other will not, so it will not, the commutator did not come out to be 0. मेरा कहने का मकसद ये, ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है, the commutator acting on this function, it did not come out to be 0, it came out to be this. अब ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ये है, so under हाँ, just close the door. So अब हमारे पास ये है, the thing is that for example if h by iota delta हमारे पास ये है ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, if psi vanishes for sufficiently for lot, but under the very same boundary conditions, this should hold. So what we are saying is basically जो properties हमारे पास we assign in them in quantum mechanics, if we assume these properties, they should hold, they should, इस f के जो ये प्रॉपर्टीज है ना, कैन असाइन ऑपरेटर्स डिफरेंट क्वेश्चन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है, देन दिस शुड होल्ड. इफ यू फ्लिप psi to psi1 and psi1 to psi2, it should hold. That's the thing we are going to see. So for in the simplest cases, this psi star psi d theta should be equivalent to h by iota delta psi star psi d theta
इज इक्वल टू psi h by iota, है ना, डेल psi dt और, है ना, यहाँ psi ऊपर है, ये psi स्टार ऊपर है, so it's psi star here, so here it's only psi, ठीक है। we have flipped the psi and psi star, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, स्टिल यू विल गेट दिस थिंग। सो दिस प्रॉपर्टी शुड होल्ड दैट थिंग इफ वी सबस्टिट्यूट द फंक्शंस बाय द ऑपरेटर्स देमसेल्व्स। सो हियर इट्स अ मोमेंटम ऑपरेटर, यू कैन टेक एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, जो भी जितने भी ऑपरेटर्स हैं एंड फर्दर and if we have arbitrary Hermitian operators, if we have an arbitrary Hermitian operator F, so it's useful to define Hermitian adjoint, हम एक Hermitian adjoint को define करेंगे, ठीक है। so Hermitian adjoint by the requirement like this, F star F dagger, so adjoint की property है ना, A dagger is equal to A, है ना। how we define adjoint of a matrix of the transpose, जो निकलता है राइट हैंड साइड में, उसका फिर कंजुगेट ऐसे लिखते हैं ना, how we define adjoint transformation, such that adjoint transformation F dagger is equal to F, है ना, ये, हाँ एग्जैक्टली। सो अगर हमारे पास नॉट नेसेसरी given an arbitrary not necessarily Hermitian operator, it's useful to define an Hermitian adjoint। अब ये कह रहा है कि given an arbitrary, so if you don't take necessarily an Hermitian operator, it's useful to define an Hermitian adjoint F dagger G which has this properties। अगर हमारे पास Hermitian operator नहीं होगा मगर हम Hermitian adjoint को define करेंगे, it will have this property। It's basically how you play with things। so इससे क्या है, where F and G are arbitrary functions subject to the conditions of these integrals, ठीक है, for operators this and this, and we know that F is, so this is, you are basically playing with the Hermitian property and inky property, how we invoke them in these quantum mechanical variables। Then if we assume it this way, then F is equal to F dagger is equal to F, and conversely if an operator F is in Hermitian and its adjoint exists in the same domain, again अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिस प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो होल्ड, ये वाली प्रॉपर्टी साइड टू डी थी आर। देखो अब ये यहाँ ना F साइड टू, F को बाहर निकालेंगे क्योंकि F डैगर कम्स टू बी F बैक, ये साइड वन पे भी डैगर है, F पे भी डैगर है, F dagger is F back, so it will come out to be like this, it should come out to be like this, or it should come out to be, अगर इसको ऐसे ही रखेंगे, side star F dagger side to R, and hence F is a self adjoint। so if F is equal to F dagger, we can also have these three properties। so if you here you see you have flipped F dagger is equal to F, तो F तो अपना है, तो psi 1 dagger अपना है, psi 2, ठीक है। so you can have this, you can write this in terms of this also, ठीक है, that's it। so we can use terms, अब ये है कि we can use terms Hermitian and, so if it's not Hermitian, if it's self adjoint, we can invoke the properties of self adjointness and again come out to be the same property, that even if we flip the signs, psi को psi star की जगह रखेंगे, psi star को psi की जगह रखेंगे, या F को इधर उधर करेंगे, the property should hold, expectation value निकालने में हमें कोई फर्क नहीं आएगा, that's it।
And there are further couple of properties which I'll state only, which you can see. These properties are, for example, adjoint of sum of two operators equals to the sum of the two adjoints. They are trivial properties, मगर जरूरी नहीं है trivial. Trivial in the sense कि आप copy and draft ले, you try to take पहले दो matrices लें, इनको adjoint देखें आप, whether it should be equivalent to F adjoint plus G adjoint. ठीक है? You check it out. ठीक है? We assume that for two Hermitian operators it will come out to be true. ठीक है? To convince your own self, आप घर पर जाना, रफ लेना, एक ये कोई मैट्रिसेस लेना, हर्मिशियन मैट्रिसेस, उसका एडजॉइंट लेना. पहले दो हर्मिशियन मैट्रिसेस देखना, उनका एडिशन करना है, फिर उसका एडजॉइंट, एंड जस्ट चेक आउट वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, एज ए प्रूफ, एज ए सेल्फ वेरिफिकेशन. और इन द सेम वे आइडेंटिटी ऑपरेटर आई टेक्स द फंक्शन टू इट्स एचसीएफ, है ना. आइडेंटिटी ऑपरेटर को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करो, इट विल गेट द फंक्शन बैक, है ना. You multiply any operator with the identity operator, you will get the function back. जिसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, identity operator है ना, ये 1 0 0 1 है ना, या 1 0 0 0, जितना you can increase the matrices. In the same way, the third property in F is key. If F is non-Hermitian, then F plus F dagger, अगर F plus F dagger Hermitian नहीं है, मगर F minus then iota F minus iota F minus F prime, F dagger is Hermitian. अगर F plus F dagger Hermitian नहीं है, but you can always construct F plus F dagger को Hermitian बनाने के लिए you can multiply it by this, it will become Hermitian. But इसे क्या पता चला? We can write any matrix in terms of sum of Hermitian plus non-Hermitian matrix. ठीक है? So you can write F in terms of F plus F dagger by 2 plus iota F minus F dagger by 2 iota, है ना? So it's non-Hermitian, it's Hermitian, है ना? और देखो इसको iota के साथ multiply करो, it will cancel with this, so you will get F back. ठीक है? So any matrix can be written in terms of sum of Hermitian and non-Hermitian matrix. इससे पहला वाला स्टेप क्या था? If a matrix is not Hermitian, we can make it Hermitian. The other one is if it's any matrix can be written as sum of Hermitian and non-Hermitian matrix. And the fourth property is that if we have two arbitrary operators, then adjoint of their product is given by Fg dagger is equal to G dagger F dagger. ये इसके ऊपर है. So adjoint of operators is given by this thing. So if you have reversal से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now इसको अब यहाँ पर हम we are going to get it here. How we are writing it in terms of these size को हम कैसे लिखेंगे? So phi of रिवर्सल को हम if we reverse it, Fg को है ना, Fg dagger is equal to G dagger F dagger. We have flipped or reversed G to F and F to G. This is a property. But we are going to use it here, जो अभी हम करते आ रहे हैं. That the states, if we are going to reverse the state, S को S star की जगह लिखेंगे, उसको phi. So we are invoking the Hermitian properties को invoke करके, ठीक है? We are going to see जो हमने वो condition define की थी, उसमें हम सब शूट करेंगे. Such that जो हमारा proof होगा, it should be psi star F of G dagger, psi of it's in position space, it should be equivalent to, अब F of G को एक साइड रखेंगे, F of G psi star is equivalent to
d psi star is equivalent to, up we can do this exercise at your place for general matrices, and if f and g are Hermitian, then fg dagger is equivalent to gf. अब ये इसका कोरिलेरी है इसका, तो हाउ मेनी मिनट्स अगेन, कोरिलेरी है इसका प्रोडक्ट ऑफ, so if so first we are going to enumerating the properties of Hermitian for operators, adjoint operators, and these, because we are going to use them, all of them. How we can enumerate quantum mechanical variables, ठीक है, ये हमारा मकसद है. सो इन प्रॉपर्टीज का एक और कोरिलेरी मीन्स कोरिलेरी यू नो, ठीक है. So you can use the reverse logic. We can say that product of two Hermitian operators is Hermitian if and only if they commute. ठीक है. So it's important. Product of two Hermitian operators is Hermitian if and only if they commute. What do you mean that? Commute मतलब को product of two operators p q minus q p commutator इनका, जैसे ये है p and q, इनका commutator क्या है, p q minus q p is equal to. अब ये कह रहा है कि अगर दो ऑपरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ टू Hermitian ऑपरेटर्स इज Hermitian, हाँ, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू Hermitian ऑपरेटर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू Hermitian ऑपरेटर्स इज Hermitian, ये वापस Hermitian आएगा इफ एंड ओनली इफ दी कम्यूट. इट मींस दैट अगर दो Hermitian ऑपरेटर है, p इज Hermitian, q इज Hermitian, जो इनका प्रोडक्ट है ना, इट विल आल्सो बी Hermitian. तो कंडीशन ये है कि इट विल ऑलवेज बी Hermitian ओनली इफ p q माइनस q p विल, इफ यू रिवर्स p को q की जगह, q को p की जगह, बट वी आर ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन, ये भी है, ठीक है, दे विल कम्यूट. अब ये क्या शो दैट द फंडामेंटल, सो ये मैंने अभी दिखाया था आपको, जो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स दे डू नॉट नेसेसरली कम्यूट फ्रॉम दिस. आप इसका एक्स पी माइनस इसमें है ना, एक्स पी माइनस पी एक्स एक्स ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन एफ. तो पी एक्स का वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करो एक बार, और यहां देखो, यहां पी एक्स पहले है, यहां प्रीफिक्स में, यहां पर है. तो यहां जो मोमेंटम ऑपरेटर है ना, इट्स ऑपरेटिंग ऑन बोथ एक्स एंड एफ. यहां मोमेंटम ऑपरेटर ओनली इज ऑपरेटिंग ऑन दिस एफ, इससे फर्क आता है. सो जब हम फ्लिप करते हैं ना इसकी पोजीशन, फॉर एग्जांपल यहां प्रॉपर्टी लिया कि इवन दो वी फ्लिप द पोजीशन, ठीक है, इट शुड नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है. सो फ्रॉम दिस लॉजिक Hermitian ऑपरेटर्स हम तभी डिफाइन करेंगे जिनका जो है कम्यूटेटर विल कम आउट टू बी जीरो. बट यहां हमने क्या देखा, दैट इफ यू चेंज द साइन, इसको फ्लिप करेंगे थोड़ा, इसको यहां दो वेरिएबल्स है, इट विल नॉट नेसेसरली कम आउट टू बी जीरो, ठीक है. सो दैट्स इट. सो दिस प्रॉपर्टी, अब यही कह रहे हैं, शो दैट द फंडामेंटल कम्यूटेशन रिलेशन 3.47 हाँ, ये कह रहे कि द फंडामेंटल जो 3.47 ये है बुक, इफ यू सी द बुक, व्हाट ही इज सेइंग, द शो दैट इफ यू सी द प्रॉब्लम exercise 4.2,
exercise 4.2 says ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है show that the fundamental commutation relation, जो हमारी fundamental commutation relation है x px, which is basically x px minus pxx, it doesn't come out to be 0, it comes out to be iota h I is the unitary operator, yeah, iota h. So that the fundamental commutation relation for x and p is consistent with Hermitian nature of operators. So it's an important exercise. So अब ये क्या कह रहा है? Show that this xp it doesn't commute to 0, ठीक है? It doesn't commute to. So it means what? It means is consistent with the way we have defined Hermitian operators. ठीक है? It needs some bit of थोड़ा सा इस पर सोचना है, और it need to think at your place. Should Hermitian operators commute or not? ठीक है? If they do not commute, ठीक है? So then if they do not commute, then what? So it will basically from the way we have defined Hermitian operators. Got my point? So this is an exercise. इसको आप यहाँ से जाकर घर पर थोड़ा सोचना, and next class you come up with if you don't understand it what I want to say. So I'll take 10 minutes more or not? लूँ मैं 10 मिनट? अच्छा चलो चलो.